Haribo, 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 Nitya Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste. Gaudavani Pracharane Nidavishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane. Jai. So, upstairs, Srila Prabhupada, both in Vrindavan and at nights here, was translated from Sanskrit into English. तो प्रभुपाद जी वृंदावन में भी और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी रात भर श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते थे. And every day, or many days in a week, he would go out and meet with the printer and try to get these books printed. That was in the early 60s, 1961, 62, and by 1963, maybe even earlier, he published and printed the first volume. तो 1960s के दशक में प्रभुपाद जी हफ्ते में 3-4 दिन लगातार कभी प्रिंटर्स के पास जाते थे, फिर पेपर खरीदने जाते थे और प्रभुपाद जी लेखन कार्य करते थे. और 1963 के आसपास श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद उन्होंने प्रकाशित किया था. Do we have a copy of the original books here? Yes? Okay, wonderful. Where are they? You keep them in a library? You keep them in a safe, specially locked up. I used to have. When I was a brahmachari, I had a set because it was so difficult to travel. I was traveling all over India with, by bus. That's like in 1973 and 74. That's when I first came to India. So it became too difficult, so I donated them to some other devotee. That was a big mistake. But anyway, that's what I did. तो प्रभु जी के पास भी एक सेट था जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी प्रभुपाद का 3 वॉल्यूम में. बट somehow प्रभु जी को ट्रैवलिंग के दौरान उनको कैरी करने में दिक्कत हो रही थी. प्रभु जी ने किसी भक्त को दे दिया, डोनेट कर दिया. And much later, I'm going to go back and forth in time. In 2006, I went to the National Library here in New Delhi, the National Library. And in the library, you can see, right now, you can go there, and you can hold one of the books that Srila Prabhupada sold, okay? He would sell the Bhagavatam for 100 rupees, and he was selling these books to the libraries. And I saw, you can go there and see Prabhupada's signature, A.C. Bhaktivedanta Swami, or given by A.C. Bhaktivedanta Swami, not Prabhupada, just A.C. Bhaktivedanta Swami. And you can go to the library today and you can see that. तो प्रभु जी जब काफी साल बाद 2006 में यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी में दिल्ली में वहाँ पे गए तो प्रभु जी ने देखा कि प्रभुपाद जी का जो प्रथम स्कंद था प्रभुपाद जी ने खुद लाइब्रेरी में दिया था और उस पे लिखा हुआ है by A.C. Bhaktivedanta Swami. And this is somehow by Krishna's mercy, this is the connection that I have with His divine grace. This is my connection because Prabhupada started a program called the Bhaktivedanta Book Trust Library Party, BBT Library Party. Prabhupada started that himself. He went to the libraries. तो प्रभु जी बोलने के हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने ये स्टार्ट किया था बीबीटी लाइब्रेरी, बीबीटी पार्टी लाइब्रेरी करके. So I got this idea in 74 that let me go to America and get trained up by Satsvarup, Ganesham, who was Bhakti Tirtha Swami, and many other senior devotees, to start this program
प्रभु जी को आइडिया आया 1974 में कि मैं अमेरिका जाता हूँ और वहाँ पे सत्स्वरूप गोस्वामी और श्याम प्रभु जी जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे उनसे आइडिया लेंगे भक्ति महाराज कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे भक्ति वेदांत लाइब्रेरी स्टार्ट किया, तो उसको प्रभु जी यहाँ इंडिया में स्टार्ट करना चाहते थे. Because this program was extremely dear to Srila Prabhupada, and at that time in 73, this program began, or 73, in the beginning of 73, Satsvarup Das Goswami and about 10 men were traveling all over the United States, and they were putting what's called a standing order, selling a standing order. Okay? And what is the standing order? प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे उस टाइम पे 1973 की बात है, सत्स्वरूप स्वामी जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे वो और उनके साथ और भी जो प्रभुपाद के 10 शिष्य वो पूरे अमेरिका में जाके एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते थे. Because only a few of the books were ready. Only a few of the Bhagavatams were printed. So that means a standing order that whatever books Prabhupada would write and print, and we would publish and we would sell. And so every time a new book was ready, we would send that book to that library. And that was like an order. And so then eventually that library would pay. तो ये एक प्रकार का बुक प्रिंट होने से पहले ऑर्डर ले लेते थे हर लाइब्रेरी में जाके कि ऐसे करके प्रभुपाद की बुक्स आएंगी, अभी छपी नहीं है, तो आप बताइए आपको कितनी कॉपी चाहिए. तो इस प्रकार से अलग अलग लाइब्रेरीज में जाके पहले से ही बुकिंग कर लेते, एक ऑर्डर ले लेते थे और जैसे वो प्रिंट होता था तो उतनी बुक्स उस लाइब्रेरी में पहुंच जाती थी. So in early 1975, when I was serving, I was the personal secretary and I was the assistant to His Divine Grace Gaur Govinda Swami of Orissa. So I was his first and personal assistant after he took sannyas in 1975 at the opening of the Krishna Balaram Mandir. That was my assignment, to go and help him. And I wrote a letter to Prabhupada regarding the following. So Prabhuji सेवा मिली भक्ति गौर गोविंद स्वामी महाराज के निजी सहायक बनने का 1975 में. तो प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा कि उनको क्या-क्या उनकी सेवाएं हैं. And in that letter I wrote that I wanted this idea of starting the BVT library party in India. तो प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को जो लेटर लिखा उसमें लिखा कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि इंडिया में बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी स्टार्ट करने का. And simultaneously I asked him, why are some of my god brothers bothering? You know, they're troubling, giving trouble to Gaur Govinda Swami. और साथ में प्रभु जी ने पूछा कि प्रभु जी के गुरु भाई बहुत सारे और भी कि महाराज को गौर गोविंद महाराज को क्यों तकलीफ दे रहे हैं. I asked Prabhupada, I told Prabhupada, this is the first devotee, meaning Gaur Govinda, that reminds me of you, Srila Prabhupada. He reminds me of you. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को लिखा कि गौर गोविंद महाराज पहले भक्त थे, महाराज थे जो इनको प्रभुपाद जी का स्मरण करवाते थे. And he wrote back to me, he said, you are a very intelligent boy. And then also, he asked me to continue this idea of expanding the library distribution in India. And it was a very good idea that the Seattle Temple from the United States finance, purchase, and maintain a van or a bus, small bus, to put the books in the libraries. He liked that idea. So, प्रभुपाद जी ने प्रभु जी को जो उत्तर दिया, जो लेटर लिखा उसको उत्तर दिया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी करने का आप स्टार्ट कीजिए. और प्रभुपाद जी ने एग्जाम कर दिया, सिएटल में जो मंदिर था उसमें किस प्रकार से वो लोग एक पूरी वैन है उनकी,
और उसमें बुक्स रखते हैं और उसका पूरा खर्चा उठाते हैं। But one very interesting point is that I never received that letter until 20 years later. मुझे बहुत विचित्र बात थी कि प्रभुपाद जी ने लिखा लेकिन वो लेटर प्रभु जी को कभी नहीं मिला, 20 साल तक मिला ही। Either the temple president or some authority in Seattle confiscated that letter because they didn't want to pay the bucks. They didn't want to give out the money. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि सेटल मंदिर के जो अध्यक्ष थे, हो सकता है वो नहीं चाहते हो कि प्रभु जी को वो लेटर मिले ताकि उनको बस देना पड़े और फिर लक्ष्मी भी देना पड़े। In those days, you know, it was slow mail, right? There was no telephone, there was no mobile, there was only landlines, and Prabhupada didn't like to talk on the telephone, so all the communication was by letter. तो उस समय में सिर्फ पत्राचार से ही कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, बातचीत होती थी। उस टाइम पे फोन नहीं था और लैंडलाइन पे प्रभुपाद जी इतना बात करना नहीं चाहते थे। So by the time we wrote that letter from Bhubaneswar, we flew on the airplane to Seattle, which is where I'm from, near Vancouver, Canada, and we were waiting we were hoping that letter in response to this idea that the Seattle temple should pay for the bus would be there. It was not there. तो जब लेटर प्रभु जी को मिला तो प्रभु जी गए सियाटल मंदिर और दिखाया लेटर कि हमें बस चाहिए, आप बस दीजिए। We got that letter 20 years later from the Bhaktivedanta archives. तो 20 साल बाद प्रभु जी को पत्र मिला, जब Amazing. दिखाया तो बस नहीं दिया गया। Anyway, so we were crying. We were literally crying. We were like in tears. We didn't know what to do. We'd flown all the way from India. We were sure that Prabhupada would approve of this idea, which he did. So then we called the GBC on the phone, you know, Rameshwar and Jayatirtha. Rameshwar, who's in Los Angeles, 1,000, let's say 1,500 kilometers away, right? We called them on the phone, explained the problem. तो फिर प्रभु जी ने जीबीसी से जो वहाँ के रामेश्वर को उनको फोन किया और बताया कि ये प्रॉब्लम है, प्रभुपाद जी ने लिखा था लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग भी बस नहीं मिल रही है, वैन नहीं मिल रही है। So how many of you here have heard of Garga Muni Das? आप लोगों ने कितना सुना गर्ग मुनि दास के? Okay, very good, everybody. So he's one of the original Prabhupada disciples. He joined in 1966. He lives in Vrindavan now. So he was Garga Muni Swami at the time. Garga Muni Swami. He was a very powerful sannyasi. तो गर्ग मुनि स्वामी जो थे वो 1960 में जो प्रभुपाद के अर्ली शिष्य थे उनमें से थे, वृंदावन में रहते हैं। He had left India a year earlier and come to the United States, and he was in America at this time. तो एक साल पहले अमेरिका चले गए हैं। And Garga Muni had organized a Sankirtan party called the Mayapur Chandradoya Worldwide Traveling Sankirtan Party. तो गर्ग मुनि प्रभु ने एक संकीर्तन पार्टी बनाई, इसका नाम था मायापुर चंद्रोदय संकीर्तन पार्टी। Worldwide. So he had been traveling all over the United States for the previous year with a team of men collecting money, collecting Lakshmi. तो पूरे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में घूम के लक्ष्मी कलेक्ट करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे। And his idea was to travel all over India, and he collected a lot of money to purchase 6 vehicles, 6 Mercedes buses from little, what we call sprinters. Like you have your traveler here, this force. What's it called? Like a small bus for let's say 10 people, that size, a van. तो उन्होंने घूम के पूरे अमेरिका में काफी पैसा इकट्ठा किया, लक्ष्मी इकट्ठी की ताकि वो 6 वैन खरीद सके जो भारत में प्रचार कर सके। So there were 6 vehicles, and so anyways, back to the story. So now, here we are stuck 1,600 kilometers away from Garga Muni. I'm up in the northwest corner, and he's in the south. तो प्रभु बोलते हैं कि
गर्गमुनि प्रभु तो भी वहाँ पे है अमेरिका में, तो हम अभी बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। So Rameshwar and Jayatirtha, the GBC, say, okay, I think we got something for you here. Come on down to Los Angeles. Come on down. So we went out, we went out collecting money to buy our airplane tickets, and we flew from Seattle to Los Angeles. तो प्रभु जी उस टाइम पे जब सिएटल में थे और रामेश्वर प्रभु लॉस एंजलिस, तो वहाँ पे रामेश्वर प्रभु ने बोला कि ठीक है आप आ जाइए हमारे पास। तो प्रभु जी ने लक्ष्मी कलेक्ट किया टिकट के लिए, एयर टिकट के लिए पैसे, और फिर उनके पास गए। And as soon as we got out of the the taxi from the airport in Los Angeles, the Hare Krishna Temple, Rukmini Dwarkadish, is only 10 minutes from the airport. तो जैसे ही प्रभु जी लॉस एंजलिस पहुँचे, तो वहाँ पे जो मंदिर था हरे कृष्ण मंदिर, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट से। And as soon as we got out of the taxi, we were walking towards the temple, and a big white van, a big, a minivan, pulls up in front of the temple, right in front of us. तो जैसे ही प्रभु जी टैक्सी से उतरे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी सफेद कलर की मर्सिडीज, Just like magic, because there's no phones, but all of a sudden there's Gargamuni. He rolls down the window, and he says, "Hey, I heard about you guys." तो जैसे ही प्रभु जी उतरे वहाँ पे, प्रभु जी को गर्गमुनि प्रभु मिले, वो वैन में बैठे हुए थे, शीशा नीचे किया और प्रभु जी को बोला, हम आपके बारे में जानते हैं। He's very straightforward. He said, "You got a passport?" I said, "Yes." "Do you have a driver's license?" I said, "Yes." "Well, you're going to drive one of my vans from Frankfurt, Germany to Mayapur. तो प्रभु जी उधर गर्गमुनि सीधे ही प्रभु जी को एक वैन दे दिया कि आप ये जो 6 वैन हमने खरीदी इनमें से एक वैन ले जा सकते हो। We have been collecting for the past year. We collected over $120,000. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम तो कलेक्ट कर रहे थे लक्ष्मी की। That's like a crore. तो प्रभु जी ने $120, 1 crore of rupees. That's the same. So we bought, and Karandar, one of the big leaders at the time, is already there. And he's purchasing 6 brand new Mercedes minivans in Germany right now. He's there buying these vehicles. तो प्रभु जी करंदर प्रभु के बारे में बता रहे हैं, जो अभी वैन खरीद रहे हैं जर्मनी में। And so I said, "Whoa," we were like, "Wow," okay. We said, "Sure, okay. So we're leaving in 1 week. Get ready." And so we stayed there at the temple at Los Angeles and got things ready. And we were on the airplane, and we landed in Germany shortly thereafter. And Hansaduta and Bhakti Vaibhava Swami and a lot of the Prabhupada disciple gurus that were present there, or present now, were there. And we had ecstatic kirtans, while Karandar, he took all of our passports and got the registration for the vehicles ready, got the visas in our passports. We must have had 20 visas, because we had to go through all of the Soviet, European, Middle East, India, Pakistan, like the whole passport was filled with visas. And even the vehicles had to have a visa. तो फिर वहाँ से प्रभु जी लॉस एंजलिस से फिर जर्मनी गए, और वहाँ पे करंदर प्रभु ने पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गाड़ी के, और प्रभु जी के पासपोर्ट्स वगैरह की प्रभु जी लोगों को ड्राइव करके लाना था। तो अलग अलग कंट्री से, सोवियत यूनियन और पाकिस्तान, इन सब से होके आना था। तो सारे पासपोर्ट वगैरह और गाड़ी का भी पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके दिए। We had arrived in Germany at Christmas time, and by the time we were ready to go, it was January, the middle of winter. Snow was everywhere. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि उस टाइम जब पहुंचे थे जर्मनी में, तब क्रिसमस का टाइम था, और जब जाने के लिए फिर रेडी हुए तो हाफ जनवरी का आधा महीना बीत गया। So when we got to Turkey, in the Turkish Alps, Turkish mountains, there was a lorry
a huge lorry, it must have been 50 meters or 40 meters in length. A lorry, a truck, a vehicle. जब प्रभु जी टर्की में पहुंचे वहाँ पे एक लॉरी. Yes, that lorry was broadside, stuck, blocking the highway, blocking the road due to the snow, to the blizzard. There was no way to go further because the snow had caused this vehicle to block the road. तो प्रभु जी लोग जब टर्की में पहुंचे तो इनके सामने एक लॉरी जा रही थी और रास्ता बहुत मतलब कि स्पेस बहुत कम था, जा नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी. So in the middle of the winter, in the snow, with the snow falling, we got out in our dhotis and we took the shovels and we got the snow out of the way so that we could drive around this front end of the vehicle. तो प्रभु जी इतना मतलब संघर्ष किए, इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, तो इतनी सर्दी भी थी, बाहर निकली धोती में पूरी बर्फ को ऐसे उठा के साइड किया ताकि फिर लॉरी को क्रॉस करके, वो लॉरी खड़ी हुई थी, उसको क्रॉस करके जैसे तैसे करके प्रभु जी गाड़ी पकड़ के. And when we got down to the bottom of the hill, the mountains were finished, but the entire highway for miles was flooded. The river was flooded across. The melting snow, the river was going right across the highway. तो जब प्रभु जी उस पहाड़ी को पार करके नीचे जब रोड पे आए, हाईवे पे आए, तो वहाँ पे भी इतनी बर्फ पड़ी हुई थी कि पूरा बर्फ पिघल रही थी और एकदम पानी नदी की तरह बह रहा था. And the water was maybe this deep, about this deep, the water across the highway. So the vehicle, the bus, would slide off the road into the river. So we had to jump up and down like this. The person that was in the vehicle, I was driving, I was the driver, and behind me another Prabhupada disciple was jumping like this. And that way the wheels maintained traction on. तो प्रभु जी बोले बर्फ इतनी ज्यादा थी कि ऐसे झटके लग रहे थे और खतरा लग रहा था कि बैग नदी में ना चले जाए. When we got to Afghanistan, the cauliflowers were this big, full gobi, bahut badhiya. and the Sadarjis, these guys were more than 2 meters tall, 2.5. They were like giants. They were carrying these old rifles, gigantic turbans. So we had many adventures. One time we had to buy some bread. We were starving, so hungry. We walked into a store. We thought it was like a place to get some food. And in the window there was a huge container, like a cooking pot. But in that pot there was the head of a goat. So he said, we're not going to buy bread from this place. तो प्रभु जी लोग वहाँ पे खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि कुछ था नहीं. स्टोर में गए, वहाँ पे देखे कुछ मिल जाए खाने के लिए. We would drive 10 hours every day, 10 hours minimum every single day for 6 weeks. It took us 6 weeks to drive every day from Frankfurt, Germany to Calcutta. तो प्रभु जी लोग को 6 हफ्ते लगे और हर दिन 10 घंटा ड्राइव करते थे जर्मनी से कोलकाता तक. And Gargamuni wanted to surprise Srila Prabhupada, so he had purchased ghee from New Vrindavan and sour cream. तो गर्गमुनि प्रभु जी प्रभुपाद जी को सरप्राइज देना चाहते थे. उन्होंने न्यू वृंदावन से घी भेजा था प्रभुपाद के लिए. So he air freighted, at a huge expense, on dry ice. Dry ice, what is the word for dry ice? Dry ice is a form of ice which is 100 degrees below zero. It has smoke that comes off of it when we, at the concerts, the music concerts, they're using this, right? So what is the name of that in Hindi? Dry ice. Dry, what? It's also said dry eye. Yeah, you're saying? Okay. And so how do you say that in Hindi? गर्गमुनि प्रभु जी ने उस घी को भेजने के लिए ऐसा अरेंजमेंट. Not the ghee, but the sour cream.
sour cream. The sour cream, that means cream which has a slight sour, like dahi is slightly sour, right? So cream that's been soured is called sour cream, which has, it's not so popular in India. Very popular in Europe and America. So we had frozen that. तो Okay. शावर क्रीम के बारे में बता रहे हैं कि कोई इस प्रकार की कोई डिश है पता नहीं यहाँ पे तो वो प्रभुपाद जी के लिए भेजे थे, लेकिन उसको रखने के लिए मतलब कोई ऐसा अरेंजमेंट किया कि ड्राई आइस में उसको डाल के, और एक्सपेंसिव था ड्राई आइस, बहुत महंगी. This is special cream from New Vrindavan cows. तो ये स्पेशल क्रीम थी कहाँ से? न्यू वृंदावन से. From the cows of New Vrindavan. So special, super duper ghee, super cream. And so the ghee and the cream, we took all the way to Mayapur. तो प्रभु जी वहाँ से घी और सावर क्रीम को लेके फिर मायापुर आए. And Prabhupada was so happy when we finally arrived, and we had another revolutionary idea that Garga Muni started. तो उसके बाद प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, और And many sannyasis and GBCs were very upset. They were not happy. Why? Why they were not happy? Because Garga Muni hired a cook, and this cook was not initiated. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि गर्ग मुनि प्रभु ने कुक हायर किया था. तो जब प्रभु जी प्रभुपाद से मिले और वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी और जीबीसी थे, वो बहुत खुश नहीं थे. तो क्यों? क्योंकि बोले कि गर्ग मुनि प्रभु ने कुक हायर किया था जो इनिशिएटेड नहीं था, इसकी दीक्षा नहीं हुई थी. However, Prabhupada loved his prasadam. He loved his cooking. His name was Shanti Lal, and he was a Mewari, not Marwari, Brahmin from Nathdwara. Nathdwara? Yeah. तो वो एक वो था ब्राह्मण फैमिली से था. नाथद्वारा के ब्राह्मण. Yes. नाथद्वारा के ब्राह्मण थे. Srinathji. Srinathji. Yeah. उनका जो प्रसाद था प्रभुपाद जी ने बहुत पसंद किया. And he was absolutely phenomenal, amazing. He could cook in a whole feast for everybody in this room. Could cook a feast in 30, 40 minutes, for everybody. Puri, sabji, and we had the sour cream with the puri and the sabji, and Prabhupada was like, wow, Prabhupada enjoyed in Mayapur. तो बहुत अच्छे कुक थे वो, मतलब 30-40 लोग के लिए आधे घंटे में प्रसाद बनाने की उनमें कला थी. और जब प्रभुपाद जी को दिया गया ऐसा प्रसाद बना के शावर क्रीम के साथ में, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए. This is the 1976 Mayapur festival. तो ये 1976 के मायापुर फेस्टिवल की बात. We arrived just before that. तो प्रभु जी मायापुर फेस्टिवल से कुछ टाइम पहले आए थे. So after the festival, the 6 blue and white Mercedes vans, Subhag Swami, Sridhar Swami, Gargamuni Swami, myself, and about 15 other men, we left Mayapur. तो 6 मर्सिडीज वैन, उनमें महाराज सुबोध स्वामी महाराज, सिद्धेश्वर स्वामी महाराज, प्रभु जी और भी बहुत सारे भक्त थे. फिर मायापुर से फिर चले गए. Only one van was designated for me, which was called the BBT Library Party Vehicle. तो एक वैन प्रभु जी को दी गई और उसका नाम था BBT Library Party. One van was for Shantilal. He was, that was the cooking van. The prasad, that was to make the food for all the men. और एक जो वैन थी वो कुकिंग वैन थी, शांति लाल. One was for life membership. That was Sridhar Swami and Gargamuni Swami. They were the kings of membership at that time, making life members. तो एक वैन में श्रीधर स्वामी और ये दूसरे महाराज थे जो लाइफ मेंबरशिप बनाते थे. And one vehicle was Shamiyan for tents, tents for making pandals. और एक वैन थी वो शामियाना वगैरह कैरी करते थे. Festivals. We would travel and put on a festival. One van was for book distribution, the streets, like you do here, street filled with books, for street. और एक बुक थी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें गली गलियों में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूट करते बुक्स पर ही. And one van was for the mechanic. We had Janapavana Prabhu. He was a Prabhupada disciple who was an expert mechanic.
और एक वैन जो थी वो मैकेनिक के लिए थी, जन पावन प्रभु जो प्रभुपाद जी। How many of you have seen the maroon, that means this color, kind of purple red? There's 3 ambassadors. The ambassador, the famous car of India. How many have seen those original vehicles? One is in Bombay. Have anybody seen them? Have you seen them? The giant gold brass tilak. So Gargamuni, he purchased those vehicles, and that mechanic, Janapavana, who was came with us, he took those vehicles apart and rebuilt them with the best components. He took the ambassadors apart and rebuilt them in Bombay. One for Vrindavan, one for Mayapur, and one for Bombay. You can see them. One of them is the original good quality one. It's still there in Bombay. Mumbai. जो जन पावन प्रभु थे बहुत एक्सपर्ट मैकेनिक थे, जो 3 जो एम्बेसडर कार थी उनको उन्होंने मॉडिफाई किया. Yes, he made it very beautiful. You'll see the big brass, tilak and Prabhupada's name in brass letters made from brass. Metal is on the side of those vehicles. तो उन्होंने उसमें टी लॉक लगाया, टी साइड का, मतलब टी शेप का, और प्रभुपाद जी का ऊपर उसमें नाम लिखा मेटल से. So anyways, that was one of the other vans in Mayapur, was used for that mechanic. His name was Janapavana. तो एक जो गाड़ी थी उनमें 6 मीटर से एक वो मैकेनिक के लिए थी, वो यूज करते हैं. So we took off and we went all the way from Mayapur to Nainital. तो प्रभु जी लोग फिर मायापुर से नैनीताल गए. On the way we stopped and we went to many places, Allahabad, Banaras, Rishikesh, and like that, many places. First Nainital and then Rishikesh. तो रास्ते में प्रभु जी कई जगह नैनीताल, ऋषिकेश, इलाहाबाद. And the whole time, Gargamuni was communicating every day. He was writing a letter to Prabhupada, who was now in Vrindavan. तो हर दिन गर्गमुनि प्रभु प्रभुपाद जी को लिखते थे. उस टाइम प्रभुपाद जी वृंदावन में थे. Prabhupada, one vehicle was also for the Harinam, और एक गाड़ी थी वो हरिनाम के लिए थी. But Prabhupada was only interested in the results of the sale of the books to the libraries. तो प्रभुपाद जी जो इंटरेस्टेड थे कि कितनी बुक्स लाइब्रेरीज में गई. He didn't care about the life membership, the prasadam distribution, the Harinam, the street distribution, or the life membership. No, he only wanted to hear about what I and my partner were doing and the success, how it was going. तो प्रभुपाद जी इस बात से खुश होते थे कि कितनी बुक्स गई. उनको सबसे ज्यादा प्रगति से पता था कि लाइफ मेंबरशिप, हरिनाम, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी को फर्क पड़ता था कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई. And everybody, all the GBC, Jayapataka Maharaj, Bhavananda, Gopal Krishna Maharaj, Mahamsa Swami, everybody was shocked. They were shocked. तो जितने भी जीसी थे उस टाइम पे, जयप्रकाश महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज और दूसरे जो भी सन्यासी थे, वो बहुत शॉक्ड हुए. This was called the Mayapur Chandradoya Worldwide Traveling Sankirtan Party. But not anymore. No. Prabhupada stopped it. तो ये जो पार्टी थी संकीर्तन पार्टी, मायापुर चंद्रोदय वर्ल्ड वाइड संकीर्तन पार्टी थी. प्रभुपाद जी ने बोला बस एक ही है, इसके आगे नहीं बनाएंगे. Stop the collection of life membership, stop the Harinam, stop the street distribution. People are like, what? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सब स्टॉप करो. क्या हरिनाम या जो 6 व्हीकल्स यूज हो रही थी अलग अलग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, हरिनाम में. Prabhupada ordered that all 6 vehicles be converted to BBT Library Party and nothing else. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि 6 की 6 गाड़ियां बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी में कन्वर्ट होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. So, about a month later or so, we arrived in Vrindavan. तो 1 महीने बाद जब प्रभु जी लोग वृंदावन पहुंचे,
And Gopal Krishna Maharaj, early in the morning, when I was chanting my Hare Krishna japa, where the samadhi is in Vrindavan. There's no samadhi there. Prabhupada is in his house. तो जब उस समय की बात है, जब वृंदावन पहुंचे प्रभु जी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी चैंटिंग कर रहे थे. At that time, of course, he was wearing white. He had hair like me, and he came running up to me early in the morning. Abhinanda, Prabhupada wants to meet you. I had never met Prabhupada up until this time. I had never met Prabhupada, although I had been his initiated disciple for 3 years. I had never met him. तो महाराज जी जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए प्रभुपाद के पास कल दौड़ते हुए और बुलाए कि प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं. See, Gopal Krishna Maharaj, of course, was in charge of BBT. And so I was like, okay, Prabhupada wants to meet you. Would you like to meet him? Gopal Krishna asked me a question. I'm looking at him. Well, of course, naturally, of course, I would like to meet Prabhupada, but I was surprised with it. And so then I follow him, and I enter Srila Prabhupada's house. Everybody has been to Prabhupada's house, right? Behind the Krishna Balaram temple. तो महाराज जी प्रभु जी को बोले कि आप मिलना चाहेंगे प्रभुपाद जी से. प्रभुपाद जी आपसे मिलना चाहते हैं. तो महाराज प्रभु जी ने बोले कि जरूर मिलेंगे. तो फिर महाराज जी प्रभु जी को प्रभुपाद जी के पास लेके गए. So up to this point, I'm just a young boy. I'm 24, 25 years old then. And I had never met Prabhupada, so I was a little bit afraid. I was afraid. I was very much afraid. Well, what's going to happen? तो प्रभु जी उस टाइम यंग एज में थे, 24-25 साल. Can you imagine right now, any of you in this room, Prabhupada is upstairs right now, and all of a sudden he calls you to come and meet him for the first time. Well, how would you feel? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभुपाद फर्स्ट फ्लोर पे किसी को बुलाएं कि मिलना चाहते हैं. When you're 23, 24 years of age, it's like not so easy. And I was very shy, the shy guy. And so I'm entering into Srila Prabhupada's house by myself, except there was one, Prabhupada's secretary was there, Paramahansa Swami, at that time. Paramahansa, you don't know him, but he was very nice. प्रभुपाद जी के रूम में वहाँ पे प्रभुपाद जी के साथ में एक सेक्रेटरी थे, परमहंस स्वामी. And I'm thinking, okay, there's going to be a few other devotees, we'll be like, okay, I won't have to worry. But I open up the door to Prabhupada's room, and oh my God, it's only Prabhupada. Nobody else. तो प्रभु जी ने जब रूम खोला, प्रभुपाद जी के अंदर गए, तो पहले तो लगा कि और भी लोग होंगे, कुछ बातचीत होगी तो डरने की बात नहीं, लेकिन जब रूम खोला तो देखा कि ओनली सिर्फ प्रभुपाद जी बैठे हैं वहाँ पे. And just behind, he's sitting just like you see. Everybody's been to Prabhupada's house, right? Everybody? Yeah, most. Okay. He's sitting there behind that desk, just like that, alive, of course. I mean, well, he's still alive, always been alive. But anyways, the glasses come down like this, right? The black frame glasses come down like that, and he looks up at me, and he goes, he doesn't say anything, just like this with his hand, right? Come forward, like, because it's about, about 15 meters or so from the door, because I offer my obeisances as they first get into the room. And so then I come forward into the middle of the room. There's no bed there at that time, and there's none of that, woodwork or to block the darshan. It's all empty, right? Just the desk, a huge room, and I'm walking forward. I get down, I offer my obeisances again, 3 meters from Prabhupada's desk, and then he comes, come on, come closer, He doesn't say that, but and so then now here's the desk. Prabhupada's sitting behind the desk, and now I'm sitting, right where this Prabhu is with the black jacket, right? Not you, but the next guy, right? That far. No, and then I'm right here, right in front of Prabhupada. So it took like a couple of minutes at least. Now I'm sitting just like this Prabhu behind the camera, about this far from Prabhupada's desk. No. And then he wants me to come right over here. So I'm standing like literally, 1 foot away from his face. And nothing has been said. And he puts the glasses down like this. He looks up at me like this. And he says very clearly,
Thank you very, very much. Thank you. Is there anything that I can do for you? Oh my God. Can you imagine if Prabhupada says that to you? And the energy was so powerful. The Shakti, the Bhakti, the praying from Prabhupada, it was like a blessing. And I could not stop crying. Tears were flowing from my eyes. I felt so embarrassed, but I felt so overwhelmed with this love from Prabhupada. तो ये प्रभु जी पहुंचे प्रभुपाद के पास में, तो और आगे बुलाया कि और आगे आइए। प्रभु जी डर रहे थे तो पीछे ही रहने की कोशिश कर रहे थे। नहीं प्रभुपाद जी और नजदीक आओ, तो एकदम पास में बिठाया और उसको बोला कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी के पास कुछ वर्ड्स नहीं थे। The only thing I could do, choking my words, I said something like, Prabhupada, you have done everything. तो प्रभु जी जब बोलना चाह रहे थे तो आवाज निकल नहीं रही थी, बोला एकदम। There's nothing, my words were coming out in a choked way, like you're crying, you try to say something type words. कुछ बोल नहीं पा रहे थे और प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभुपाद सब आपकी कृपा से हुआ है। In other words, I told Prabhupada, no, there's nothing that you can do for me. You've done everything. प्रभुपाद जी बोले कि नहीं कोई बात नहीं, आपने जो भी किया है अच्छा किया है। So I could not regain my composition. I could not regain my ability to talk to Prabhupada. तो प्रभु जी दोबारा से प्रभुपाद जी से बात करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। First I was standing and crying, and then I sat down like this Prabhu in front of the desk, about a meter away from Prabhupada, and I continued to cry. Prabhupada saw that after a minute or two of listening to me crying, that, okay, like this, you can go. So then I left. ये प्रभु जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो फिर एक मिनट बाद प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। Okay, so then after that, I communicated with Srila Prabhupada by letter, and he was very much encouraging me. And so now, again, one time in 2006, we started up the program for 1 year. And now after Delhi, which is on the 16th that's after 1 week, I'm leaving for Gujarat to see that this program again gets revived, and we are going to be selling the Gujarati, Bhagavatam sets to the libraries in Gujarat. That's one of my assignments, to help Gujarat. I was the temple president in Gujarat from 1979 to 1983. So I'm going to go back and help again. प्रभु जी बोल रहे हैं कि फिर प्रभु जी ने 2006 में फिर से ये लाइब्रेरी पार्टीज का प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश की, और फिर अभी प्रभु जी गुजरात जाने का तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे प्रभु जी गुजराती में भागवतम सेट्स लाइब्रेरीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So, Jai Prabhupada, any questions, any comments about anything, please ask now. Anything about Prabhupada, about my life, about what we should do on a daily basis. Any question you have, please ask now. किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी प्रभुपाद जी की तरफ आकर्षित कैसे हुए? He's asking how you attracted to Prabhupada. Okay, you want to... He's asking How was I attracted? How do you attracted? Well, Prabhupada, when he walked, I remember the first time I came in contact with Prabhupada was actually to see him on television when I was only 16 years old. प्रभुपाद जी को प्रभु जी ने पहली बार टीवी पे देखा था जब 16 साल के थे। I said, that's for me. That's for me. That's going to solve my problems. Immediately I felt in my heart that that's it. It was the opening of the Seattle temple. Actually, Gargamuni was there. Jagannath, deity, was there.
showers of flowers. It was on the television, on the news, like you have your news broadcast, 6 o'clock news. न्यूज़ पे आ रहा था कि ISKCON टेम्पल का ओपनिंग हुआ था, वहाँ पे गरगोनी महाराज थे, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए ओपनिंग हो रही थी, तो प्रभु जी ने ऐसे टीवी पे देखा प्रभुपाद जी को, ये सारा प्रोग्राम देखा. However, later, 3 years later, no, actually 5 years later, and that was when I was 20 years of age. उसके 5 साल बाद In Los Angeles, I had for 1 month been very seriously chanting 16 rounds and following the principles, extremely careful. 5 साल बाद लॉस एंजल्स में प्रभु जी चैंटिंग करते थे, 16 माला का जप करते थे और 4 को पालन करते थे कड़ाई से. I had actually been running through the jungle of British Honduras, south of Mexico, for 1 month. 6 hours a day. Hare Krishna, crying my rounds, singing my japa for 6 hours every day. तो मेक्सिको के जंगलों में प्रभु जी घूम के जंगलों में अपना जप करते थे. So when I arrived in Los Angeles, I was shocked to see Srila Prabhupada was there. जब प्रभु जी लॉस एंजल्स आए तो प्रभु जी को शौक लगा कि देखा वहाँ प्रभुपाद जी आए हुए थे. And so the first morning, when I first saw Prabhupada, I was sitting in the class like this. Prabhupada had not come into the room yet. तो जब प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे और प्रभु जी क्लास में बैठे हुए थे. And when he walked he had come back from his morning walk, and he walked into the room, he was glowing, an aura. I could see it around Prabhupada's head. I could see that picture of Jesus, where there's like a halo, just like that. तो प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक से आए थे तो उनका एक ऑरा, एकदम आभा दिखाई दे रही थी. So that attracted me. तो वो प्रभु जी को. And every single question that I was afraid to ask, एक क्वेश्चन में प्रभु जी पूछने से डर रहे थे. on the Vyasa-san, he was giving class, but he was answering my questions without asking them. तो प्रभुपाद जी बिना पूछे ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, क्योंकि जो प्रभु जी पूछना चाहते थे वही प्रभुपाद जी बोल दे रहे थे. So I was convinced, that's how, immediately attracted. प्रभु जी को विश्वास हो गया कि यही मेरे गुरु. You know, actually, for many years, I was in college, and I was on the Canadian border. I was a university student before that time. तो उससे पहले प्रभु जी कॉलेज में थे, कैनेडियन बॉर्डर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे. So many of you might, I don't know how many of you have experienced this, because now it's more common, but there used to be a saying, Maya is very strong. तो एक कहावत है कि माया बहुत ही स्ट्रांग है. And in the United States, college equals Maya. यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका में कॉलेज मतलब कि माया. How many of you are college students or have been to college? कितने लोग कॉलेज गए? Okay, and how much have experienced that? I don't know, this is modern India, so you can relate to what I'm talking about. Okay. So I had a girlfriend, there was the parties, and there were the, wine, women, and song, you could say. तो आप जानते हैं कि कॉलेज लाइफ मतलब कि माया. And in the 1970s, early 70s, there were other things, other types of intoxication that we would enjoy. तो 1970 में अलग-अलग प्रकार के. And so my temple president said, my name was David, he said, you have been coming here for so many years, because I started coming in 1970. तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, उसको बोला कि आप डेविड हैं, आप काफी टाइम से आ रहे हैं. How many people know who Dina Bandhu is in Vrindavan? Dina Bandhu Prabhu. Dina Bandhu. Okay, everybody knows Dina Bandhu. Okay, so Dina Bandhu was one of my
Pravartmana Diksha gurus. Pravartmana means the one who introduces you. He was the good cop. There's the good cop. The cop is a policeman. There's the good policeman and there's the bad policeman. Good cop, bad cop. तो दीनबंधु प्रभु बहुत अच्छे पुलिसमैन थे. So sometimes you'll meet on the street, you'll meet a very dangerous policeman and you'll meet a very kind one. कई बार हमें सड़क पे बहुत अच्छे पुलिस वाले मिलते हैं, कई बार बहुत. So Dinabandhu was like the very sweet, kind policeman, but my temple president, he was a heavy dude, black, short, revolutionary, right in your face. His name was Sukadev. तो दीनबंधु प्रभु थे, वो बहुत ही अच्छे थे, और जो टेंपल प्रेसिडेंट थे वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. But Dinabandhu, his temple was very close to Seattle. He was in a place called Portland, Oregon. It's very close to Seattle. So we would see him on a regular basis. तो पोर्टलैंड में जो मंदिर था, दीनबंधु प्रभु जी प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जो लॉस एंजल्स के पास नहीं था, तो उनसे मिलना जुलना होता रहता था प्रभु जी का. So Sukadev, the short African American, he pointed his finger in my face. He said, David, you have been coming here for so many years. Get the hell out of here. Go away. तो सुखदेव प्रभु जी थे जो सिएटल टेंपल के दूसरे टेंपल प्रेसिडेंट थे वो, तो वो प्रभु जी को बोले कि आप तो काफी टाइम से आ रहे हैं. I said, what? I was like, what? Okay, so then he said very carefully, you go someplace away from your friends for 30 days. I challenge you, for 30 days, 1 month. You follow these principles. तो उन्होंने बोला है कि आप अपने इन कॉलेज दोस्तों से दूर हो जाइए 1 महीने के लिए कम से कम. What are those principles? Huh? No gambling, no sex, no intoxication, right? No meat eating, right? तो ये 4 प्रकार के जो 4 नियम हैं. I was a vegetarian, that wasn't a problem. Gambling, no problem. But the other 2, women and intoxication, what happens? It brings you down. You don't get the bliss. It stops. The darshan of the Lord goes away. Get out of here, David. Go somewhere for 30 days. तो सुखदेव प्रभु जी ने प्रभु जी को डांट दिया कि आप पालन नहीं कर रहे हैं, इतने टाइम से मंदिर आ रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से. You come here every weekend, Saturday, Sunday, and then you go back to college and you fall down. You've been doing that for years. Get the hell out of here. तो उन्होंने बोला कि आप तो आते हैं सैटरडे संडे में, चले जाते हैं, फिर से माया में जाते हैं, स्कूल पार्टी में, कॉलेज पार्टी में. So I took $500 and I purchased a second-hand 1959 Volkswagen Bug Beetle, and I drove it from Canada to Mexico. तो प्रभु जी फिर कनाडा से मेक्सिको आ गए. It's about 1,600 kilometers. 1066 किलोमीटर. And then I took a train from the Mexican border all the way to the Caribbean. फिर मेक्सिको बॉर्डर से कैरेबियन के Another 2,000 kilometers. ट्रेन में फिर और 2000 किलोमीटर. And then I ran through the jungles. फिर जंगलों में भागे. And I stayed when I reduced my weight. I must be 80 kilos, something like that. I was only 55 kilos. तो प्रभु जी का वजन भी बहुत घट गया, सिर्फ 55. Running and singing and chanting and no friends, nobody, just the lions, the tigers, and the bears. Seriously, I did it. कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं. And that's when I came back, there was Prabhupada. He walked into the room just like I told this Prabhu, and that was it. I surrendered, I cut off my hair, and then as if I have photographs on my Facebook page, what I looked like. Long hair, medium length, and a short hair. And then right before I joined and moved into the temple, I have a photograph of myself holding the brahmachari dhoti, and my parents were shocked, but they agreed, and I moved into the temple in Seattle. इस तरह से प्रभुपाद जी से मिले और फिर इनको ब्रह्मचारी धोती भी, इनको उसका फोटो है, प्रभु जी बता रहे हैं.
So, if you want to keep asking questions, you're welcome, but I don't know your schedule. I don't want to interrupt your breakfast. But if any more questions, okay, go ahead. Prabhuji told that the association of Prabhupada and the journey between that, how he came in contact with the Hare Krishna movement over there at that time. Okay, well, actually, that's a good question. How did I come in contact originally? Well, it is said that, we pick up from where we left off in a previous life. When I was just 12 years old, and this is also there in my horoscope, my scope of horror, the Kundali. At age of 12 is when I first came in contact with a spiritual concept. I was active in the choir, in the church choir. I was singing, praising Jesus, and I felt something. So I started to investigate different types of spiritual ashrams in the Catholic, in the Christian, in the different types of esoteric forms of religion, Hindu, etc. And then when I was 16, after breaking my leg, and I was the enjoyer. I was a ski club president, the treasurer of my class, very popular in school, so many friends. I was enjoying like anything. And then, all of a sudden, one day, I had a serious accident, and I fractured my bone in my leg. So the break of my leg was this big. The bone broke in a diagonal fashion. Want to translate? A lot to say. जैसे कहा जाता है कि आपके पिछले जन्म में जहाँ पे आपने भक्ति छोड़ी फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी अपने बारे में बता रहे हैं कि 12 साल के थे तो प्रभु जी चर्च में जाते थे और वहाँ पे गाते थे। तो फिर प्रभु जी को कुछ जिज्ञासा हुई कि कुछ जानने की इच्छा की कि क्या कौन सा सही रास्ता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में गए, कैथोलिक और अलग अलग प्रभु जी में जो अलग चर्च होते हैं, लेकिन प्रभु जी को कुछ सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। You see, it is said in the Shastra that one is very fortunate if Krishna takes everything away. तो जैसे कि शास्त्र में कहा जाता है, अगर भगवान किसी सब को छीन लेते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली इंसान होता है। See, everybody wants a green card. They want to go to the United States. They want to make millions and millions and crores of rupees and dollars. That's the desire of the average college student in India. तो हर कोई अमीर बनना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, ग्रीन कार्ड लेना चाहता है। एक एवरेज इंडियन जो स्टूडेंट होता है, कॉलेज स्टूडेंट, उसकी डिजायर रहती है कि बहुत बड़ा आदमी बन जाए, अमेरिका जाए, बहुत सारा पैसा कमाए। But you see, this is America's trick. This is their trick. India is the most successful, materialistic, intelligent creator of money and so-called happiness. They're expert at it. तो ये अमेरिका की एक ट्रिक है कि वो यहाँ से जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको खींच लेता है। The most successful, materialistic yet somewhat devotional individuals in America are Indians. तो जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोग हैं वो इंडियंस हैं। And the purpose of human life is to go to America and become a crorepati. तो जी बोले क्या जीवन का लक्ष्य अमेरिका जाना और करोड़पति बनना है? But in my case, it was just the opposite. I had money. I mean, I was born in a very good family. I lived on a freshwater lake. I had my own little ski boat. I had girlfriends and money and all that stuff. तो प्रभु जी बोल रहे कि मेरे केस में उल्टा था। लोग तो इधर से जाना चाहते हैं, प्रभु जी के पास सब कुछ था। And so many devotees, they join Hare Krishna movement to go to America, to get that green card. Right now it's happening. I didn't join for that reason. I joined because I wanted some spiritual, experience. I wanted
I was wise. I guess I could say I was wise. I understood that this is the purpose of human life, that the soul is in the body and we are not the body. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे डिवोटी भी ऐसा करते हैं जो फौरन जाने के लिए डिवोटी बन के फौरन चले जाते हैं, लेकिन प्रभु जी का ऐसा लक्ष्य नहीं था। वो जान चुके थे कि जीवात्मा का जो लक्ष्य है वो भक्ति करना है, कि हम मतलब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। See, bhakti begins when we understand that we are not American, we are not Indian, that we are not white, we are not brown, we are not black. These are bodily designations. And so when we are interested in following mama, papa, wife, baby, relatives, cousins, society, make millions, help the family, it has nothing to do with who we really are. रोज भी बोल रहे हैं कि भक्ति शुरू होती है जब हम समझ लेते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अदरवाइज हम कितना भी संबंध बनाए, माता पिता, I mean, yes, we need some simple sustenance. We need a small house. We need, Prabhupada said, one small piece of land, a cow, simple life, family, but not this craziness. I mean, look at Vrindavan now. It's like a carnival. It's gone completely nuts. Delhi, same way. Air pollution, sewage, bad smell, and all in the name of everybody has to have a car. No, everybody has to have a bicycle. वृंदावन में भी कितना सारा pollution, So crazy. बिल्डिंग्स बन गई हैं, मतलब एक तरह से दिल्ली के जैसा ही माहौल लगता है। Okay, anything else? Any other questions? Thank you so much, Prabhuji. If you don't mind, can I explain in a short summary what you have told in whole? Yeah, please, yeah. You can summarize. Short Okay. summary, a short मैं अगर बताना चाहूँ तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपना स्ट्रगल बताया कि कैसे श्रीला प्रभुपाद जी का हार्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में इनकी बड़ी इच्छा थी कि ना भक्ति वेदांता बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी, है ना, बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी बनाने की इच्छा थी। तो इन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए प्रयास किया और यूएस गए और फिर वहां से उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा। तो प्रभुपाद जी ने उस लेटर को बहुत अप्रिशिएट किया। प्रभु जी की इच्छा थी कि मैं बीबीटी लाइब्रेरी बनाऊं और ज्यादा जगह जाकर के मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और उनको रिटर्न लेटर लिखा, लेकिन वो रिटर्न लेटर उनको जल्दी नहीं मिला था, बहुत समय बाद मिला। और जब बाद में मिला तो इन्होंने प्रयास किया कि नहीं, प्रभुपाद जी को ये पसंद था, तो उन्होंने प्रयास किया कि वो बीबीटी लाइब्रेरी में बनाऊं और बेन हो। तो फिर उन्होंने गर्ग मुनि जो महाराज थे उनसे संपर्क किया और फिर उनके पास 6 वेन्स थे। उन्होंने बहुत लक्ष्मी इकट्ठा करके 6 गाड़ियां जो होती है ना, मर्सिडीज गाड़ियां, वो उन्होंने इकट्ठी की। और जब ये लॉस एंजलिस गए तो वहां पर इनको देख करके वहीं पर इनको बुलाया कि हाँ आप हमारे एक गाड़ी को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और चलिए साथ में बैठते। तो 6 गाड़ियां जो थी, 6 गाड़ियों को अलग अलग सेवा थी। किसी में कोई संकीर्तन के लिए था, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, कोई क्या बोलते हैं एक है ना प्रसादन के लिए, कुछ में टेंट्स थे। तो इस तरह से ये संकीर्तन पार्टी बनाई थी गर्ग मुनि प्रभु ने, महाराज ने। एट दैट टाइम प्रभु ना, तो उन्होंने बनाया और फिर पूरे वर्ल्ड वाइड उसका नाम था क्या, मायापुर चंद्रोदय वर्ल्ड वाइड संकीर्तन पार्टी। तो इस तरह से उन्होंने बना और खूब घूम करके प्रचार किया। तो वो बताया, प्रभु जी ने बताया कि जब वो यहाँ मायापुर आ गए थे तो बहुत स्ट्रगल किया, बीच में कैसे बर्फ का पहाड़ पूरा, मतलब जब देखे कि पूरा बाहर है, बर्फ बहुत गिर रहा है, क्रिसमस का टाइम था और बीच में तो रोड में बताया ना ट्रक सड़क के बीचों बीच ऐसे फिसल करके रोड ब्लॉक हो गई थी। तो धोती में उतरे और साइड से रास्ता बनाया, पत्थर को साइड करे, वो बर्फ को साइड करके रास्ता बनाया और इस तरह से बहुत स्ट्रगल करते हुए वापस आए। और उन्होंने बताया कि जब वहां से वापस आए, प्रभुपाद जी के लिए न्यू वृंदावन से क्या लेके आए थे, घी लेकर के आया था, स्पेशल एक सोवर क्रीम लेकर के आया था, जिसको उन्होंने बहुत ड्राई आइस में रखा था, नाइट्रोजन जो होता है बहुत माइनस। जिस तरह से प्रभुपाद जी इतना प्रेम है, सारा चीज लेकर के स्ट्रगल करते हुए यहाँ आए मायापुर। और जब मायापुर आए
तो मायापुर में प्रभुपाद जी से मुलाकात हुई और प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, है ना। और प्रभुपाद जी को उसमें सबसे ज्यादा जो पसंद आया प्रभु जी का जो बीबीटी जो लाइब्रेरी पार्टी थी, क्योंकि इसमें ग्रंथों का वितरण हो रहा था। तो प्रभुपाद जी को हरिनाम संकीर्तन वो भी अच्छा है, बुक डिस्ट्रीब्यूट हरिनाम संकीर्तन और जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, क्योंकि हर तरह से एक फेस्टिवल की तरह चलता था इस ग्रुप के माध्यम से। इसमें सबसे अच्छा लगा क्या, बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी। और प्रभुपाद जी ने बोला कि बाकी जितनी 5 वैन है ना, इन सबको यही पार्टी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का वितरण किया जाए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो जब फिर वापस जब वृंदावन आए, उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद इस बात से इतने प्रसन्न थे कि प्रभु जी जब वृंदावन आया, अभी जहाँ पर प्रभुपाद जी की समाधि है वहां पर खड़े होकर के चैंटिंग कर रहे थे। तो इतने में ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो कि उसमें बीबीटी ट्रस्टी थे, प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जाकर के करके लेकर के आइए हम प्रभु को ऐसे करके। तो वहां पर दौड़ते दौड़ते गया श्रील प्रभुपाद जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, आपको ना प्रभुपाद जी मिलना चाहते हैं। तो प्रभु जी बहुत सॉफ्ट हो गए, प्रभुपाद मुझसे मिलना चाहते हैं? तो कुछ कह नहीं पाए। तो बोला हाँ आप मिलना चाहते हैं? बोला हाँ बिल्कुल। तो बहुत डरे हुए थे। तो इन्होंने मन में सोचा कि वहां तो ऑलरेडी बहुत लोग होंगे, तो थोड़ी बातचीत होगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी जब हम प्रभुपाद जी के रूम जाते हैं जहां पर प्रभुपाद जी का बेड रखा हुआ है ना, जिसमें शरीर छोड़ा था, तो वो बेड नहीं था और प्रभुपाद जी का एक विग्रह रखा हुआ है। तो वहां पे प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, सामने टेबल रखा हुआ है, आपने देखा होगा। तो वहां पर गए, बहुत घबराए हुए थे। दरवाजा खोला, सिर्फ प्रभुपाद जी वहां पे बैठे हुए थे और घबराहट हो गई कि प्रभुपाद जी अकेले बैठे हुए। तो वहां पर गए और जहाँ पे बेड रखा है वहां पे थोड़ा दूर से प्रणाम किया और प्रणाम करके दूर बैठ गए, जैसे बता रहे कितने दूर बैठे। तो प्रभुपाद जी ना ऐसे चश्मा यहाँ रखे हुए थे, ऐसे देखे, तो बोले थोड़ा और पास आओ। तो फिर डरते डरते और पास गए और पास गए। फिर प्रभुपाद जी ने पास में बुलाया और जब प्रभु जी बता रहे, जब प्रभुपाद जी के और पास गए तो प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रभु जी से कहा कि आपने जो किया है ना ग्रंथों का वितरण, ये मुझे बहुत प्रिय है। आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने प्रभु जी से ये वर्ड्स कहे और ये सुनते ही प्रभु जी कुछ नहीं बोले और उनका गला रूंध गया, बिल्कुल चुप हो गया और बस रो रहे थे कंटिन्यूअसली। और फिर कुछ बोलना चाहते थे, फिर बोल ही नहीं पाए। फिर सामने आकर के टेबल के सामने बैठे, फिर कुछ बोलना चाहते, फिर कुछ नहीं बोल पाए, रोने लगे बिल्कुल। और प्रभुपाद जी ने चश्मा नीचे किया, स्माइल किया, ठीक है आप चले जाओ। तो प्रभु जी इस स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रंथ वितरण प्रभुपाद जी का हृदय है। मतलब जो ग्रंथ वितरण करता था उसके लिए प्रभुपाद जी कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो दिस इज द स्टोरी प्रभु जी वाज टेलिंग। तो मुझे लगा कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं ताकि हमें पता चले कि क्या अभी हमें बताया। ठीक है, समझ में आया होगा? हरे कृष्ण। अगर किसी का और कोई प्रश्न है या कुछ है तो पूछ सकते हैं। Hare Krishna. I want to thank you, Prabhuji. This Abhinand Prabhuji, very great to see Prabhupada ji and Guru Maharaj. A very nice story and all realizations, especially Buddhist. The one time chant Hare Krishna mantra for Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This Abhinand Prabhuji ki, Srila Prabhupada ki, प्रभुपाद की जय। जैसे सुबह में अनाउंसमेंट किया था ऑडिशन के लिए, तो हमारे ISKCON Chhipiwara टेम्पल ने 10,000 ऑडिशन का टारगेट लिया है। तो आप लोग जिनको भी भगवत डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, वो सब रघुनाथ प्रभु समाधान